What does this mean? Total number of tripeptides. That means you have to form a peptide that is containing 3 amino acid. कितना करना है आपको? 3 amino acid का peptide बनाना है. And what are the amino acid that you can use? You can use valine or you can use proline. तो ये permutation combination का सवाल हो गया ना? Yes or no? Please tell me guys. एक amino acid Yes, sir. linkage, दूसरा amino acid peptide linkage, तीसरा amino acid peptide linkage. इस वाले में हम कितने amino acid डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, राइट? वैलिन या प्रोलिन. इसमें हम लोग कितने डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, वैलिन या प्रोलिन. इसमें हम लोग कौन सा अमीनो एसिड डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, वैलिन या प्रोलिन. तो 2 into 2 into 2 शायद यही होता है, राइट? 2 to the 4 to the 8. Yes or no guys, please tell me. समझ में आ रहा सबको? एड्रिल, कृष्णा, मरिता, प्रियान, रेहान. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो आंसर यहाँ पे पहले वाले का आंसर हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 8. ना साइक्लिक वाले में बताइए कैसे होगा? सेम चीज है, but you have to what number of cyclic tripeptides which can be formed by 2 amino acid A and B. साइक्लिक वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने को याद है? Okay, Marita. Take 1 more minute, guys. Yes, Marita, tell me, how did you do this cyclic permutation? Sir, I actually wrote down all the structures. I wrote down all these structures, है ना? The one way is that you can write all these structure. एक आपके पास हो सकता है AAA, right? Or you can take all of them as what? A. All the amino acid, 3 amino acid as A. The another case will be you can take BBB. सही है? Now, in one case, what you can take, आप क्या ले लीजिए? साथ में 2 B ले लीजिए, उसके बाद एक A ले लीजिए, ठीक है? So one case which can be done. And another case what you can take, साथ में 2 A ले लीजिए, उसके बाद एक आप B ले लीजिए. I think these are the only 4 cases that you can do. Right? Yes or no? One thing हम एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, BBA
and BAB, साइक्लिक के केस में ये दोनों सेम होंगे. Is that right? Yes or no? क्या सबको दिख रहा है चीज? ये बताइए. Because B is connected to B, then B is connected to A, and then A is connected to B. Correct है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? B is connected to A, जैसा कि यहाँ पे था. B is connected to A. A is connected to B, as it was the case here. A is connected to B, and then B is again connected to B. ठीक है? So both of these things are what? Both of these things are same. BBA और BAB दोनों में यहाँ पे सेम होगा. Is that clear? Yes or no? Please tell me. बना के दिखाएं Yes, क्या? sir. किसी का डाउट आ रहा है तो बताइए. Here you have B, you have A, and then you have B. ठीक है? अगर आप इसको यहां से काउंट करें तो ये क्या हो जाएगा? B, B and A. अगर आप इसको यहां से काउंट करें एंटी क्लॉकवाइज तो B, A, B हो जाएगा. ठीक है? सो इट इज बोथ थिंग्स. उसी तरह से दिस वन, एंड इफ आई टॉक अबाउट A, B, A, both of these things are same. They are not different. ठीक है? चलिए. So in this case, the correct option is going to be 4. Now, I hope you remember something from biomolecules and reaction of glucose. Try this question. Okay, Priya, I think that is correct. Okay. Marita, I don't think that is right. See once again. Guys, take one more minute. So one more thing, जैसे even if you are able to get at least, I mean, 2 ऑप्शन बचा है आपको. मान लीजिए आपको बच रहा है B और C में से कुछ होगा सर, या फिर C और D में से कुछ होगा, या A और B में से कुछ होगा, then please write that also. If we can narrow it down to at least 2 options, then please write it down. Marita, now it is correct. Yes, that real correct. Very good. Okay, so I think most of you guys have answered here. See, I hope एक नजर में सबको समझ में आ गया हो. ग्लूकोज एंड HI का तो क्या होता है? हेक्सेन होता है, राइट? दैट मींस इट इज आइदर A और इट इज B. A और B में डिफरेंस कहाँ पे है? यू कैन आइदर सी B को कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप D को कंपेयर कर लीजिए. इन दोनों में से किसी को कंपेयर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? B को B में डिफरेंस है, और क्योंकि C में डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. ठीक है? सो यू डोंट हैव टू लुक एट C, यू आइदर लुक एट B और यू आइदर लुक एट D. B में देखिए, ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है. और इफ यू रिमेंबर, ग्लूकोज प्लस HNO3, ग्लूकोज प्लस HNO3 क्या देगा? टेल मी. इट इज गोइंग टू गिव यू सैकरिक एसिड. ठीक है? और बाकी ग्लूकोज प्लस एसिटिक एसिड दोनों के हिसाब से क्या देगा? आंसर इज 2 फॉर C, एंड करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी A. C का क्या हो जाएगा? C का हो जाएगा 2.
It's better if you write all the reactions. Give some space. Please write this down. Let me know once you're done, guys. Done, guys. Yes or no, please tell me. Just a minute. Still writing? Done? Okay. Just a minute. No. Just a minute. Okay. Done, sir. Moving on, there are few summaries regarding sucrose, maltose, and lactose. Please write this down. The important point to note here are a few things. First of all, the linkage that is going to happen is between which monomeric units. So in sucrose, we have glucose and fructose. That means if you are going to hydrolyze sucrose, then you are going to get glucose and fructose. ठीक है? इसका ये मतलब इसका ये भी मतलब है कि सुक्रोज किससे बनता है? By combination of glucose and fructose. The another thing which is important is the carbon number in which the linkage is happening. So here we are having C1 and here we are having C2. ठीक है? C1 and C2 से linkage है. Alpha D glucose से beta fructose में. Then for maltose we have
ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, दोनों क्या है आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज. हियर द लिंकेज इज बिटवीन C1 and C4. Similarly, in the case of lactose also we have C1 C4 linkage, but in this case we have galactose and glucose. ठीक है, lactose and glucose. Will you please write these things down? So the carbon numbering is starting from. देखिए कार्बन नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है 1. ये आपका यहाँ पे होगा, दिस हियर इज C1, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है C1 हो गया. And then in the case of C2, that is beta D fructose, it is going to be from this carbon number 1. ये 2 हो गया, ठीक है. कार्बन ये बता रहे हैं, ये आपको याद रखना, दिस इज C1 एंड दिस इज C2. उसी तरह से यहाँ पे देखेगा तो दोनों C1, यहाँ पे C1 और C4 है, so C1, ये C1 हो गया और ये भी C1 हो गया, ठीक है. तो 1 2 3 4 ये क्या हो गया, C4 हो गया. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास दिस इज C1, ये भी क्या हो गया आपके पास, C1 हो गया. ये C2 C3 C4 हो गया. ओके, let me know once you're done. Friends. Right, for lactose,
10 sir. Can you try this question? Sugar is boiled with dilute H2SO4 in alcoholic solution. Two isomers A and B. That means A and B का formula क्या होगा? Same होगा. Are formed. A on oxidation with HNO3 yields saccharic acid, whereas B is levorotatory. What is the compound X? Yes, Marita, correct. Yes, Krishna, correct. Very good. Yes, Adriel, correct. Very good. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, first of all, starch तो ऑप्शन हो नहीं सकता. Why? Because starch is a what? Starch is a polysaccharide. ठीक है. Yes, Priya correct, Rehan correct. ठीक है. ये क्या है? Polysaccharide. ऑप्शन बचा आपके पास lactose, sucrose and maltose. तो just now you have seen maltose के केस में यहाँ पे देखिए, you have glucose and glucose. यानी maltose ऑप्शन हो नहीं सकता because maltose में isomer नहीं बनेगा. You will only get one molecule, that is glucose. ठीक है. A और B आपको नहीं मिलेगा, तो maltose तो हो नहीं सकता. ठीक है. Maltose cannot be there. Then let us see. Sucrose है एक ऑप्शन जो करेक्ट है, but why lactose cannot be there? Lactose में, as you can see, what we have galactose and we have glucose. ठीक है. Galactose and हमारे पास क्या है? Glucose है. And sucrose ऐसा ऑप्शन है जिसमें what are you going to get? In sucrose you are going to get glucose and fructose. Fructose is going to be levorotatory and glucose को अगर आप ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो you will get saccharic acid. So the correct option is going to be sucrose. Try this one. Glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose is found in yes, Marita, correct. Yes, very good, guys. Sucrose है ना.
Sucrose is the correct answer. Now this is regarding amino acids. Amino acid के chain को क्या बोलते हैं? Protein बोलते हैं, right? So during denaturation of protein, which of the structures remain intact? Yes, guys, correct. Very good. And a primary structure जो है ना, that is not going to change. What is primary structure? It is a sequence of amino acid. जैसे मान लीजिए आपके पास ल्यूसीन है, वालिन है, ठीक है, then you have tryptophan. That sequence is not going to change even if the denaturation is taking place. Okay, so primary structure does not change. Similar question एक आया था. What will be this answer? Yes, Marita and Priya, correct. Yes, Krishna, correct. Very good. Yes, Rehan, correct. Very good. ठीक है, again. Denaturation process, the process of denaturation can cause by heating the protein also. For example, we boil the egg, right? So egg को boil करने में क्या होता है? We are heating it. And what does not change in denaturation? Again, primary structure does not change. So try this one. Maybe some of you remember. If not, then I will explain about DNA. Okay. Yes. All of you have given correct answer. Deoxy किसके लिए आएगा? Deoxy will be for DNA and only ribose is for RNA. ठीक है? So DNA में क्या होता है? Beta D 2-deoxyribose. Do 2-deoxyribose. Yeah, that means ribose में you have OH everywhere, but deoxyribose में second place में क्या होता है? OH नहीं होता है. Okay, so this is the correct option. Also, meanwhile, write the structures. So this is used in RNA and this is used in DNA.
Okay, so you can see that here, the second position here we have OH and here we do not have the oxygen. उसी से आया deoxy. Oxygen has been removed. Done, guys. I hope all of you are done. So try this. Similarly, अगर आपके पास the sugar that is produced after complete hydrolysis of DNA will be what? What type of sugar is present in DNA? Yes, Priya correct, Marita correct, very good. I hope all of you know the meaning. Pentose sugar का मतलब 5 carbon atom है. So sugar का मतलब a sugar with 6 carbon atom. Polysaccharide, I hope, and disaccharides का मतलब पता है आपको. In polysaccharide you will be having multiple monomeric units. Disaccharide में 2 monomeric units of sugar will be there. Others also please try. Yes, I tell everyone correct, very good. Pentose sugar, है ना? As you have seen in DNA and also in RNA, we have how many carbon atoms? We have 5 carbon atoms. So try this one. What stabilizes the alpha helix of proteins? Yes, Marita, correct. Yes, Krishna and Priya, correct, very good. Others also please try. Yes, correct. Adriel, very good. Alpha helix को कौन stabilize करता है? It is the hydrogen bond. Yes, Rehan, correct, very good. It is the hydrogen bonding interaction. ठीक है. अच्छा. In case of DNA, we have two base. हमारे पास दो base pairs होते हैं, right? We have AT, right, and we have GC. ठीक है. तो GC के लिए and here the number of bonds they have, number of hydrogen bonds, ये कभी-कभी important हो जाता है, कभी-कभी पूछ सकते हैं. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन जीसी कितना होता है उसको याद रख लीजिए, उससे आपको एटी भी याद रहेगा. जीसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए आप, ग्रुप चैट. क्या होता है? दिस इज ग्रुप चैट. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप चैट?
Think 3. about like this. How much, Krishna? 3, sir. 3. So here we have how many hydrogen bonds? Here we will be having 3 hydrogen bonds. ठीक है? And AT में कितना हो जाएगा? उससे बस एक कम 2 hydrogen bonds. Okay. So here we have 2 hydrogen bonds, and in GC we have 3 hydrogen bonds. What is the full form of A, P, and G and C? A is adenine, G is guanine, C is cytosine, and T is what? Thymine. ठीक है? अच्छा, thymine का ही in the case of thymine की जगह क्या होता है? Uracil होता है, right? In the case of RNA. ठीक है? Thymine and uracil, they have similar structures. If everyone is done, then I will move on to polymers. Polymers से पहले आपको, हाँ जी, इसको ट्राई कीजिए. This is one question that I think मतलब शायद आप लोग logically इसको आंसर कर सकते हैं, even though you have not studied polymers anywhere. Polymer का क्या मतलब होता है? Basic polymer का मतलब होता है you have multiple monomeric units और monomeric units को join कर देना. ठीक है? As we know, protein किसका? Protein is a polymer of different amino acids. Starch will also be a polymer, है ना? तो उस हिसाब से बताइए. Yes, Marita, correct. Which of the following is not a natural polymer? है ना? Natural polymer. Yes, Krishna, correct. प्रिया, थोड़ा और सोचिए आप. Yes, Rehan, correct. Yeah, protein or starch में तो I hope no one is having any difficulty. Protein is also natural. Starch is also natural. Rubber plant होता है ना? Priya and Adriel. There is something known as rubber plant, right? Yes or no? Yes. Then there is sap, है ना? जो sap निकलता है, फिर उससे rubber बनता है, right? So rubber is also what? It is a natural polymer. The only thing that is not natural polymer is rayon. Okay, and after that you have to write this. इसको लिख लीजिए, addition polymers. Addition polymers में क्या होता है ना? One thing that you are going to see, which is common in addition polymers, सारे addition polymers में there is unsaturation. There will be at least one double bond उसके monomeric unit में. ठीक है? And when they make a polymer, तो वो unsaturation खत्म हो जाता है. For example, CH2, this is ethene. Polyethene कैसा होगा? CH2, एक बॉन्ड होगा CH2, फिर उसके बाद this is one monomeric unit, इस तरह से n monomeric units होंगे. Again you'll have CH2, 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 CH2 and so on. Okay, so this is क्या होता है? You have unsaturation, and then unsaturation is gone when you have the polymer. Monomer में क्या होगा? Unsaturation होगा. Take your time and please write this thing down.
Please let me know once you're done. Once you're done and once you write the nature of polymer, you have to make a point that only Buna S, that is styrene and butadiene का जो क्या होता है, styrene butadiene का polymer होता है, monomeric units are butadiene and styrene. It is a copolymer. Copolymer का क्या मतलब होता है? There are two monomeric units, है ना? There are two monomeric units. Homopolymer means there is only one monomeric unit. So in all the addition polymers, there is only one, that is Buna S, which is going to be a copolymer. Otherwise, all of them are what? Homopolymers. That is why Buna S की केस में कुछ सवाल आ जाते हैं. Let me know once you're done, guys.
Guys, take 2 more minutes. जल्दी लिखिए, है ना? Sir, could you please explain about which were the two polymers that you told a few minutes ago about the ones in which the questions are more? I'm talking about Bona S. Okay, as you can see, addition polymers क्या होते हैं in which you will be having unsaturation, and unsaturation is broken when you make a polymer. So you don't need two different monomeric units, you only need one monomeric unit और उसी का replication होगा, addition हो जाएगा उसका, ठीक है? For example, you have ethene, तो multiple ethene units will be present. But in the case of Bona S, which is made by styrene and butadiene के addition से, no, only Bona S is the one which is a copolymer. Copolymer means there are two different monomeric units which are being added. Homo का मतलब होता है there is only one monomeric unit which is being replicated and उससे आपका polymer बन रहा है, ठीक है? So Bona S is important here, okay, because it is a copolymer. Yes. Otherwise, each and everything is a homopolymer. Bona S बनता भी किससे, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, styrene and butadiene. What is styrene? Styrene is the thing. एक benzene ring है, and then here you have CH doubly bonded to CH2, ठीक है? और 1,3 butadiene तो आपको पता ही है, double bond here and double bond here. Let me know once you're done. Done, sir. Okay. Now write this. These are condensation polymers. Condensation polymers में क्या होगा? Condensation polymer में आपके पास water निकल जाएगा, ठीक है? Water निकलने के लिए you will have at least two different monomeric units and वहां से आपके पास water निकलेगा, ठीक है? So in all of these cases you will see there is a copolymer except in the case of caprolactam, that is nylon 6. Nylon 6 के केस में क्या है? This is a homopolymer and it is going to be what? इसमें सिर्फ एक ही molecule use होता है, caprolactam के अलग-अलग units use होते हैं. Otherwise, all of these are what? All of these are copolymers. ठीक है? So please write this thing down. इसमें nylon 6 is important, जिसका caprolactam is the monomeric unit. No, the only I'm only talking about these nylon 6 and Bona S. इस वजह से these are important क्योंकि इसमें एक difference है जिससे वो सवाल करना चाहिए उनको, है ना? Otherwise ये सारे याद करना और याद तो कर लीजिएगा आप, सारे याद रखना और एग्जाम में लिखना, it's not very humanly possible, है ना, इतने short time में. इस वजह से जो important है उस दोनों के बारे में हमने बता दिया आप लोगों को, nylon 6 and Bona S. Let me know once you're done, guys.
Rehan, at what time do you have the iftar? Rehan, at what time do you have iftar? 6-4. 6-4. Yes. Okay. Like case है. Case है ना? Yes. 6-4 case है. ठीक है. Okay. Six, 4. आप 4:30 से 5:30 क्लास कर सकते हैं ना? यस रेहान? Yes sir. ओके फाइन. तो फिर आप 4:30 को ना सेम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके. Okay. Done guys, yes or no, please tell me. 2 minutes. Now it's done. G. Done guys. Still writing. So it take 1 more minute. Done. Sir. Done. Okay. Done, sir. Okay. ठीक है चलिए. कैप्रोलैक्टम है ना? एक सवाल आया कैप्रोलैक्टम पे. When heated at a high temperature in the presence of water, it is going to give you nylon 6 है ना? Nylon 6 नहीं. ठीक है ध्यान रखिए. Nylon 6 किसके फॉर्म होता है? It is with adipic acid and hexamethyl. हाँ these are the hexamethyl diamine. Hexamethylene diamine होगा. Methylene diamine. ये बताइए. Oh, wait a second. ये किसका ऑप्शन आ गया है? There's something I think. Terylene polymer is obtained by condensation of
दिस इज टेरिलीन, है ना। और इसका क्या दूसरा क्या नाम है, दिस इज और also known as dacron, is made by ethane 1,2-diamine, and here we have benzene 1,4-dicarboxylic acid. कौन सा ऑप्शन है? 1,2-diol, है ना। C is the correct option. यहाँ पे 1,2 है, and then here we have 1,4. Try this one. मरीता फिर से देखिए एक बार। No, not, it's not that answer, Marita. Also, no, Rehan. Oh, wait a second. एक second. This options, I think these options are not right. Yes, Marita, that is correct. सही है Marita. 231. 231. Yeah. Sorry, Marita, that is correct. Okay, sir. न्योप्रीन का क्या है? क्लोरीन होता है उसमें, राइट? Now what about टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का क्या होता है? टेट्राफ्लोरोईथेन, है ना, टेट्राफ्लोरोईथेन, है ना। टेफ से याद रखिएगा, टेट्राफ्लोरो होता है। नाउ कौन से दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं बस? इट कैन बी आइदर ए और बी, राइट, है ना। ये सुनो, यस सर। ए और बी। अच्छा, ये क्या है? एक्रिलैंड, क्या हो सकता है? एक्राइलोनाइट्राइल होगा या आइसोपिरीन होगा, क्या ख्याल है? नाम से देख के क्या लगता है आपको, बताइए। It will be first one or fourth one? Obviously, it is going to be the first one, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? B will be the correct option. चलिए try this one. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके भी ऑप्शन आप इसी में से रख लीजिए। इसका आंसर तो आपको सबको पता होना चाहिए। गिस्मरिता करेक्ट। यस कृष्णा, वेरी गुड, करेक्ट। यस, वेरी गुड। 1,3-butadiene and styrene का क्या होगा? इट विल बी बोना एस ना। बाकी फिर आपके पास देखें, यू हैव गॉट आइदर इट इज गोइंग टू बी बी का 3 यहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे है। ए को चेक करके कोई फायदा नहीं है। वी कैन चेक आइदर 4 या सी को चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, डी को चेक कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था ग्लाइकॉल, दैट मींस व्हेन यू हैव ग्लाइकॉल इज व्हेन यू हैव 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ठीक है। एंड टेरिथैलिक एसिड, दैट मींस व्हेन यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड इन द 1 and 4th पोजीशन, वो क्या देता है आपको? इट इज गोइंग टू गिव यू डैक्रॉन। सो डी का क्या है? डी का है 4। So which is the correct option here? B is the correct option here. Background ही देखा था ना? You had pteryline, background, same thing. Okay, write these. There are 4 different types of polymers on the basis of the intermolecular forces of attraction. First one is elastomers, fibers, thermoplastic and thermosetting plastic. Okay. Now, thermosetting is the strongest, will be having strongest intermolecular force of attraction. Then you will have fibers, and then you will have thermoplastic, and then you have elastomers. And write the examples also. Direct examples पूछ लेते हैं। देखिए पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Chains are held together by weakest intermolecular forces, है ना? Weak binding forces permit the polymer to be stretched. Fibers are thread forming solids, possess high tensile strength and strong intermolecular forces. Thermoplastic क्या लिखिएगा? First of all, these are linear, ठीक है, or slightly branched, capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. Thermosetting में these are cross-linked or heavily branched molecules and cannot be reused. Okay, this is important, इसको लिख लीजिएगा।
Let me know once you're done, guys. Try this question once you're done.